Hello, dear student. Welcome to our live answer writing session. So today we are going to see a very important question. The question is Right to Information Act 2005 makes a paradigm shift toward transparency and accountability in governance with Central Information Commission, that is called CIC, as its principal enforcement mechanism. In this context, examine the role of CIC in strengthening the RTI regime and challenges it confront. So 150 marks, 10 marks. So you have to write in 2 pages. Okay. So please write down the question. So I'll give you 10 minutes to write this question because you are writing now, but gradually you have to reduce the amount of time that is allocated to you. Na? The moment you have written down, written the question, please inform me. And if you just imagine in this 7 days, if you are writing like this answer, just imagine after 1 year, what kind of answer you are going to write. So here it is not key that you are a very talented person, you are a very exceptional person, you are very, what is called Rajnikant type person. No, this kind of person are bound for fail. They are, people who think that one day I will be do everything, that kind of person will bound to fail. But person who have having that passion that I'll learn something, I'll keep on going, and every day I'll do my best and improve something as compared to past, that person is going to be success in their life, and UPSC want that. ऐसा नहीं होगा कि मैं now I'm not going to study anything and from January onward I'll cover everything. You are not going to cover that. Remember that small steps every day makes you, great success at the end. तो इसीलिए क्लास रेगुलर आना, वट एवर वी हैव डिस्कस उसको अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, यही क्वेश्चन आएगी, यही ट्रिक चीजें पढ़ेगी, तभी गलत करके आप लोग आओगे, देख लेना। अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप पढ़ के आ रहे हो, when other people are crying, they don't understand from where the question is coming. I am not saying you will able to solve or answer 100% question. At least you will get 30-40 question correct, and that by that 30-40 question you will be at least getting 40 marks and plus some, sorry, 80 marks plus some additional marks because of some logical guess. So you will score 100 around score, which is very easy to clear prelims. And if you are writing this answer and before mains, you are not going to struggle also. So key is that each and every day you have to write, you have to practice, you have to improve suggestion, whatever I am giving to other to you also, you have to incorporate everything. अगर आप एक दिन का लेजी होते हो, फिर आप तो रेस्ट के पीछे ही चले जाते हो पूरा। ठीक है, आई थिंक एवरीवन रिटन ना। नाउ टाइम स्टार्ट्स। प्लीज write down the question and their answer. Please follow the things that I have mentioned in previous class. Don't commit same error again and again. The Right to Information Act 2005 mark a paradigm shift towards transparency and accountability. So you have to first mention how RTI help in bringing about transparency and accountability in governance. So this is what the first part with Central Information Commission. So how Central Information Commission help in promoting transparency and accountability by using RTI Act. So next is context. Examine the role of CIC, Chief Information Commission, strengthening the RTI regime and challenges its confront. So basically वही है. So first you have to discuss about what is RTI Act and how RTI Act helpful in promoting transparency, or you can say how RTI Act is helpful to the Chief Information Commissions to enforce the RTI Act to bring about transparency and accountability. ठीक है. So that is what. And second part you have to discuss about the challenges they are facing, and challenges you are saying. So you have to write way forward. 3-4 like way forward you can write like that way. It is not asking like that, or you can simply make it like this way forward also, 4 way forward. This should not be more than this much space. इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए space ना. चलिए हम पढ़ते हैं कैसे लिखे देखते हैं. So the information is currency of democracy. The RTA Act initialized this principle by empowering citizen and establishing CIC as its watchdog. Excellent introduction. देखो आप लोग कितना अच्छा लिख रहे हो. देखो मतलब जस्ट हमने कितना दिन स्टार्ट किए, 10-12-15 दिन ही होगा, कितने अच्छा लिख रहे हो. देखो ये अगर आप साल भर में लिखोगे, आपका लेवल सोचो कहाँ पहुंच जाएगा ना. सोचो यार, आप 300-400 आंसर राइटिंग यहाँ कर लोगे, फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहीं से आएगी घुमा फिरा के, वही चीज आप लिखना है. रोल ऑफ CIC इन स्ट्रेंथनिंग RTI. ओके, सो regime. Okay, so promote
accountability, paralyze the public information officer, PIO, for लिख दो, for delay or disclosing or denial of the information, for denial of info. Okay, so example then you can say impose fine for delays. Okay, very good also. So next is RTI awareness guidance. It issue guideline for effective implementations, advice on record management and Suomotu disclosure. Section 4 उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Section 4 of RTA Act basically talks about what proactive disclosure of the information. So all the government information you have to disclose in your government website so that people will not have to file the RTA. So appellate authority, it hear the second appeal and complaint under the RTA Act. So order disclosure of information on public. Very good. देखो, whenever you are writing something, आप लोग मुझे बार बार पूछते हो कि current affair कैसे पढ़ें. Whenever you are getting any data, any facts, all these things you can write as a support. Whatever points you are giving, it should be supported ना. But हेमंत तो आपने पेज बहुत लिख दिया, समझ पा रहे हो ना? पेज मैनेजमेंट, अच्छा वो आपने वो आपका गलती नहीं है, हाफ पेज. हाफ पेज नहीं मैं समझ रहा हूँ, इट्स हाफ पेज, तो मैं आपको हाफ पेज एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है? 2 पेज हाँ एंड सर हाफ. उससे अच्छा नहीं हाँ दे सकते, ज्यादा नहीं दे सकते हैं. फिर उससे ज्यादा होगा तो फिर आपका गलती है. ओके हाँ, नहीं मैं समझ सकता हूँ, क्या कर सकते हैं बाबा. देखो, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ना, so because it's not printed, I can understand your problem also. One second बस. So next is transparency. So direct public authority to proactively disclose the informations. I think ये तो हमने बात की है ना already. You have already discussed that also ना. So ministry were asked to publish RTI data online. So that is what called section 4 ना. You have already talked about ना. So avoid repetition, okay? You can also talk about declaration of the public authority ना. ठीक है? So Chief Information Commission also, or in Central Information Commission, help in declaration of public authority ना. And once they declare public authority, they need to disclose information ना. Then also help in forcing other to appoint. प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो लोग भी आप लिख रहे हो अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. और क्या करते हैं, इफ ए ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अपॉइंटिंग एनी पीआईओ, अगर पीआईओ नहीं है तो किसको जाके फाइल करोगे? इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अपॉइंटिंग पीआईओ, इट कैन फोर्स, इट कैन गिव ऑर्डर फॉर appointment of PIO na. Once there is a PIO, you can file complaint na. So this is also an important role of promoting transparency and accountability. If organization can deny that we don't have officers, we don't have PIO to provide na, ठीक है? It can also impose penalty also. I think आपने वो लिखे हैं. चलिए. So challenges क्या क्या face कर रहे हैं? Limited enforcement power, cannot always ये क्या, what is this? Ensure, okay, ensure compliance with, ठीक है, ओके. हाँ, ऑर्डर्स. तो आप बोल सकते हैं लैक ऑफ कॉन्टेम्प्ट पावर. सो एक्चुअली दे डोंट हैव कॉन्टेम्प्ट पावर, सो देयर जजमेंट इज नॉट टेकन सीरियसली. आप एग्जांपल दे सकते हो. एंटायर CIC बेंच, दे हैव सेड दैट पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी अंडर व्हाट RTA एक्ट ना, बट दे हैव रिजेक्टेड इट बिकॉज the CIC don't have any contempt power. So next is backlog of cases, delay in justice. Yes, you can say that resistance from the public authority, frequent exemptions, non cooperation hinder. आप यहाँ पर लिख सकते हो, पता क्या वो एक होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, OSA 1923. So official secret act means any information if once that is put in the official secret act. मैंने वो पढ़ाया नहीं, जब एथिक्स पढ़ेंगे मैं अच्छे से वहां पढ़ेंगे, तो मतलब ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो पढ़ेंगे. So once information is put under the official secret act, so it will not going to disclose to anyone forever. So there are certain information definitely we need to protect that. For example, number of our nuclear installation and their locations, and about the secret service. For example, RAW and IB, we cannot disclose that.
So because of that, this information, if you are asking, so they will deny on the ground of official secret act. But now what they are doing, any information you ask them, if they found it's very difficult, they simply deny by saying that this is part of the official secret act. So this is what also endurance. Then reduce disposal efficiency, vacancies in CIC. Okay, very good, very good. But may I'll suggest ki explore some good points, because this is what you will find in the current affair. Okay, you have to link with current affair with the static paper. So please read properly the Hindu newspaper and Indian Express, not only the explain page. And we are planning to do something for the current affair also. So I think आप लोग ने suggest किए थे. So we are planning something. So maybe we'll start the current affair also. So definitely it is going to be very helpful. Current affair को छोड़ना नहीं है. Current affair को you have to link with each and every backward linkage of the static paper, then we will get good marks na. Add more dynamic points. It's not like you are good, your answer is good, but can be better. Despite persistent challenges, CIC remain a cornerstone of no RTI framework ने cornerstone of bringing transparency in the democracy, ऐसे कुछ लिख सकते हो. अच्छा खासा ना थोड़ा. Conclusion can be better. Okay. Okay sir. तो कंक्लूजन की वजह से आपका -0.25 होती है. आपने स्टार्टिंग में बड़े अच्छा लिखे थे, 10 मार्कर का है, ठीक है, तो आपको 4 मिलना चाहिए था. प्लीज आई एम डूइंग वेरी स्ट्रिक्ट मार्किंग, ठीक है, तो मार्क्स में भी आपको खराब मतलब बड़े खराब मिल सकता है, बट रियल में अच्छा मिलेगा, डोंट वरी. बट यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन, तो यहाँ तो बड़े स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना. ओके, नेक्स्ट किनका, ठीक है. सो आरटीआई एक्ट, the Central Information Commission established as a quasi-judicial body under RTA Act 2005, act as an independent body to protect the appeal, and enforce them with a due diligence. Independent body to provide, you can say, appeal against the authority, ऐसे कुछ लिख सकते हो. ये थोड़ा सा सेंटेंस वैसा अलग लग रहा है. ओके, बट इट्स गुड, यू हैव इम्प्रूव्ड लॉट. नाज आप नहीं लिखे आज? नाज? Yes, sir. I will write some tomorrow. टुमारो नहीं होता जिंदगी में कभी. No, sir. From tomorrow regularly I will write. अरे टुमारो कभी नहीं आता है, आज ही जो करना होता है. टुमारो का जो होता है ना वो डे, वो मिथ होता है मेरे लिए. तो चलो, सो एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ अपील. नहीं, ये सब नहीं चाहिए. समनिंग इंडिविजुअल वो सब थोड़ी है. एविडेंस वो सब देखो, यू आर सेइंग इट इज राइट, बट दिस इज एक्स्ट्रा. व्हाई यू आर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ एनर्जी, टाइम, all these things, extra things not required. सर रोल में नहीं जाएगा? अरे बाबा, रोल में तो इसमें क्या होगा? इसमें बता, समनिंग इंडिविजुअल क्या मतलब है उससे? हमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ ला रहा है, ये भी तो बताओ ना. आप एक वर्ड तो लिखते ना, हैव ए पावर ऑफ सिविल कोर्ट सो दे कैन रिप्रोड्यूस एनी इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड टू द पब्लिक, ऐसे कुछ लिखो ना, जो दैट लिंक whatever you are writing with the demand of the question, that should be there na. Ensure penalty against the violation of the right against the public information authority, against violation, delay, ऐसे कुछ लिखो, वेरी स्पेसिफिक होना पड़ेगा. So protection of, what is that, premises, जेल. जेल में क्या जाएगा, वो तो एनएचआरसी ना. आपने सब मिक्स हो गया एनएचआरसी का पॉइंट दिया. हाँ, एंश्योरिंग प्रॉपर कंप्लायंस विद द रूल्स. अरे पूरा एकदम जो क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं ना, ऐसे ही हो रहा है. पढ़ ही नहीं रहे हो, दिक्कत है ना. नहीं, अच्छा नहीं है ये. सो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ द पीआईओ, प्रोएक्टिव इन्फ्लो डिस्क्लोजर, ये सेक्शन लिखो. सेक्शन 4 होता है वो ऑफ आरटीआई एक्ट. वो जब हम पढ़ेंगे ना, एथिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा. एथिक्स तो बड़े अच्छा होता है.
चैलेंजेस क्या है, आरटीआई एक्ट। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। टेन्योर को हमने बहुत सारे सैलरी, मतलब वो नाउ इट्स एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, सो वी कैन देयर माइट बी hamper their independence. So massive delay in massive delay in pendency of cases, massive delay and okay, massive delay, इसको थोड़ा improve करो, because you can say huge pendency of cases and delay in delivery of justice, like that. So absence of any law for timely disposal of the cases. So limited penalty on certain cases. Central more powerful in its regulation. Central या center, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखो, वही लिखो ना। यस। सीआईसी बीइंग, थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस में भी इंप्रूवमेंट चाहिए। कोई नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा, बट कीप ऑन राइटिंग। CIC being a statutory body should be independent enough to conduct its functions in compliance with the proper uh, what is this, information and right of the citizen. What is this, ये क्या लिखे हो? डिवोल्यूशन है सर। Okay, devolution of, with proper devolution of information and right of the citizens, ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली देखना, अभी देखो क्वेश्चन का लेवल भी हमने बढ़ाया। सेकंड, अभी इवैल्यूएशन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, इतना आसान नहीं होने वाला है।